Okay, so good morning everyone. Today is the first class of revision. We are starting to revise this chapter, which is Newton's law of motion. Okay, so I'm assuming तुम लोग कुछ नहीं आता है. We are just revising from the very scratch, right? But at the same time, I'm assuming कि तुम लोगों को at least class 9 के concepts आते हैं. Yes or no? Right? Class 9 के concept आते हैं ना? सबको class 9 के concept आते हैं? Raise your hand. Right? Yes. Okay. Okay. Now, if I talk about this, right? NCERT. सबसे पहले हम लोग NCERT करेंगे पूरा, देखेंगे एक बार, like करेंगे तो इसमें कुछ करने लायक है नहीं, right? Okay, right? Now, when you talk about NCERT, right? Let's start with NCERT. Okay, so I guess all of you can see this NCERT, right? This is your chapter 5. Okay. Now, when you talk about this chapter, right? So we have not 10, right? We have around 8 topics. Okay, right? Let's see this. Let's see the topics. 8 topics. What everything is breaking? Tell me. Voice is breaking for everyone. Okay. Okay. It might be because of my bad internet. I don't know what is happening. I'll just. Okay. Is it fine now? Tell me, is it fine? Guys, my voice is fine. Okay. Okay. Very good. Okay. Now, yeah, I was talking about the topics. So जब भी हम लोग कोई भी chapter को अगर पढ़ते हैं तो we should be very clear about the topics, right? That we are going to study, है ना? And we should be very clear कि कौन से topics हमें दिक्कत दे रहे हैं. Okay. Now, NCERT क्या है? NCERT is like, काफी misleading है. Because when you talk about the topics, right? Let's see the topics. First is introduction. So I don't think introduction कोई topic है. Because I guess everyone know what is force, right? What are the characteristics of force and all the properties, right? I hope this is something that everyone knows. Agar इससे question आएगा, theoretical question आएगा सिर्फ, तो सब जवाब दे देगा. Because whatever we will be covering in this is in class 9th, right? 9th syllabus. ठीक है? Okay. Now, Aristotle fallacy again. This is just for interest, right? इसका कोई लेना देना नहीं है उतना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. I'm just talking about exam point of view. ठीक है? Laws of inertia. Now this is also whatever we studied in class 9th. It is also a theory. हाँ या ना? Tell me. Just go through the topic. Yes or no? That law of inertia is also a theory जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा. उससे extra कुछ है ही नहीं. Right? Agree? हाँ या ना? जल्दी बताओ. जल्दी. Right? Okay, so what was laws of inertia? Can anyone tell me? Samya, can you tell me what is law of inertia? You can unmute and speak. Samya, can you speak? Guys, can you hear me? Yes, Samarth. Anyone who can just unmute themselves and speak? Samarth? Hello, sir. Yeah. Sir, an object that is in rest will continue to be in rest unless and until an external force is acted on it, and an object in motion will continue to remain in motion unless and until an external force is applied. Correct, right? So this is what you have studied, है ना? Right? That is the law of inertia, that a body will not change its state, right? Either change state of motion or state of rest unless and until external forces applied. That's it. अब इस पे क्वेश्चन जो आएंगे वो theoretical questions आएंगे, yes or no, right? I hope सबको आइडिया होगा कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. For example, हमें बचपन में पूछा गया था कि सर अगर गाड़ी चल रही है और अचानक रुकती है तो हम लोग किधर मूव करेंगे, राइट? है ना?
Yes, that is also first law, right? That's the law of inertia and the first law. Same, right? Got it, Aryan? Right? Okay. Now, this is law of inertia and first law are same only, right? Inertia क्या होता है? First law ही है ना? First law says that now when we talk about first law, what is first law? Tell me. Same चीज है ना? Right? कि कोई भी बॉडी मूव नहीं करेगी unless until accelerated नहीं होगी unless until force apply नहीं किया जाए. Okay, that is your first law, right? That is law of inertia, है ना? So this is till this point, right? I guess जो 9th में पढ़ा है exactly वही हमें पढ़ना है class 11th में, और कोई difference नहीं है. Now main thing is this. Main topic that we have to cover is this Newton's second law of motion, right? है ना? ये main topic है. Now let's see what is given in NCERT. First we'll go through NCERT कि क्या दिया क्या है हमें, NCERT में दिया क्या है. So ये definition I hope सबको पता होगा definition, है ना? Aristotle fallacy we know, right? Laws of inertia we just discussed, Summers ने भी just बोला, है ना? Right? Now then first law of motion, every body continues to be in a state of rest or uniform motion in a straight line unless until compelled by some external forces to act otherwise. Okay, right? This is what we studied. Now Newton's first law, isn't it same? If the net external force on a body is zero, its acceleration is zero. Acceleration can be non-zero if there's net external force on the body, right? That is the same as first law of inertia, है ना? ठीक है, बस उसका mathematical explanation दे दिया गया है. ठीक है, right? For example, these examples that we have discussed already, है ना? जब rest कोई book रखा हुआ है rest में, right? या कोई body जो है uniform velocity से move कर रहा है, and all those things. Okay, now before starting second law of motion, right? We should know a concept of momentum. I hope सबको पता होगा what is momentum. See, I'm expecting कि there are some basic concepts which all of you know, right? Momentum क्या होता है पता है ना? Momentum, everyone know this, right? Yes, it is mass into velocity, है ना? Right? It is product of mass into velocity. Yes, very good. So what is Newton's second law of motion? Tell me, what is Newton's second law of motion? कौन बोलेगा? Khushi, can you tell me what is Newton's second law of motion? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force. Okay, ठीक है, right? So Khushi said that rate of change of momentum is directly proportional to applied forces. Okay, so I can say yes, that's almost correct. So I can say the net sum of all the forces, acting on a body is equal to rate of change of its momentum, है ना? Right? हम लोगों ने यही पढ़ा था class 9th में भी. Yes or no? Yes or no? Right? Okay. So I can say the net sum of all the forces that is acting on a body, right, is equal to rate of change of momentum. ठीक है? So ये हम लोगों ने पढ़ा, right? The rate of change of momentum of body is directly proportional to the applied forces and takes place in the direction in which the force is acted, है ना? ठीक है, right? And तुम बोलोगे सर ये तो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, सेम चीज. So अब बताओ theoretically NCERT के हिसाब से, I'm just going through NCERT, right? Just ask yourself, ऐसा कुछ भी है जो हम लोगों ने 9th में नहीं पढ़ा था? Tell me. Think about it, right? I'll tell you what is the difference between what is taught in the classroom and what is in NCERT, right? So यहाँ तक लग रहा है NCERT काफी easy है ना? NCERT काफी easy है, but इस पे काफी conceptual सवाल बन जाते हैं, है ना? So this is your NCERT. हम लोग यहाँ पे NCERT की बात कर रहे हैं. Now, before moving to next topic, right? I hope all of you can solve these kind of problems. Like example 5.1, 5.2, है ना? 5.1, 5.2. एक बार देखो, बन जाएगा ऐसे questions. Just go through it, right? Sneha, Sania, just go through it. Kushi, everyone. बन जाएगा. You don't have to solve, just go through it, right? है ना? Okay.
So this is the level of NCERT. This is the level of NCERT. Now, when we talk about our syllabus, like जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, ठीक है, तो देखते हैं अब इसके बाद हमारे सिलेबस में क्या है. Wait, I'll just give you the idea what is the difference of NCERT and NCERT and our syllabus. ठीक है. Okay. Now, before moving to next topic, right? So, what do you think? What is the difference between what is given in NCERT, right, and what is the concept that we have covered in our class, right? So यहाँ पे देखो NCERT में बस ये बता दिया that force, right? Net force is equal to rate of change of momentum, है ना? Right? That's it. खत्म. फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ आ गया. खत्म. यहाँ पे खत्म हो गया न्यूटन्स सेकंड लॉ. But I hope all of you remember that when we talk about our syllabus, we talk about something called, before moving to Newton's second law, sorry, Newton's third law, we studied something called फ्री बॉडी डायग्राम. हाँ या ना? कितने लोगों को याद है? हाथ चलो. कितने लोगों को हाथ याद है? हाथ चलो. राइट, है ना? फ्री बॉडी डायग्राम. Wait, my writing pad is not working. Just okay. Free body diagram. Free body diagram, right? थ्योरी वाइज तो सेम है, आई गेस. कोई भी अगर सिर्फ वीडियो पे देखोगे ना तो उतना तो आ जाएगा, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उतना आ जाएगा, है ना? आ जाएगा. जो हम लोगों ने देखा अब तक एटलीस्ट उतना तो आ जाएगा, राइट? यस और नो? ओके. एनीवेज I'll take you through all the concepts, okay, that we have studied. ठीक है. So let's take out the concepts that we have studied, है ना? जो हम लोगों ने अपने जेई या नीट क्लास में देखा था. Okay, so we studied what is the concept of motion, what is the basic definition of motion, right? Let's see the definition of motion. So we studied what is motion, okay, what is the relative concept of motion and rest, है ना? कैसे the absolute rest and absolute motion is different from relative rest and relative motion. What is the different type of motion, right? Translational, rotational, vibrational तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ translational, rotational पढ़ना है ना? Then circular motion also and oscillatory motion also, right? So before talking to anything, we studied about vector. सबसे पहले हम लोगों ने vector पढ़ा, right? Vector. Yes or no? Yes or no? Tell me, right? अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे तो अब तक इतना टॉपिक में कहीं भी वेक्टर का नाम तक नहीं आया, राइट? वी वोंट बी यूजिंग that much problem in case of NCERT, but when you talk about physics for NEET or JEE, है ना, हम लोगों ने वेक्टर सबसे पहले पढ़ा. आई होप सबको वेक्टर आता है. रेज अ हैंड. वेक्टर सबको आता है? बेसिक आइडिया. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत हाई फाई. बेसिक आइडिया सबको आता है, राइट? अनामिका, सुहास, श्रेयरी, सिद्धेश is here. Siddesh joined us recently, है ना? Vectors तो सबको आता होगा, okay? Siddesh, you know vectors, right? Okay. Now, when we talk about vectors, we understood the concept of motion. कि translational motion क्या होता है, circular motion क्या होता है, curvilinear motion क्या होता है. So I can say, okay, sir, if the position is changing, right? What is motion? Motion is basically the change in position, as simple as that. और कुछ नहीं है सर. Motion change in position है, right? है ना? और change in position किस respect में? With respect to the observer and respect to time. That's it. और क्या ही होगा? या तो observer नहीं तो time, है ना? Clear है? Right? Okay. So if that position is changing along a straight line, then it is called as rectilinear motion. But if that position is changing in any direction, right? In any direction apart from the line, then it is called as curvilinear. Remember, it is curvilinear. It is not circular. It is curvilinear because मैंने नहीं बोला कि circle होगा. It can be anything. It can be parabola. It can be your ellipse, right? Elliptical path. It can be any random path. That's why it is called as curvilinear, है ना? So I can say, okay, sir, हम लोगों ने बोला कि हमारे पास दो type of motion है, rectilinear और curvilinear, है ना?
but we will be focusing more on rectilinear for now. पहले हम लोग rectilinear समझेंगे. Okay, ठीक है. Now, when you talk about rectilinear, you said, sir, it is in straight line. Straight line. Does that mean that it should be in only one dimension, means one axis? Tell me, is it necessary that it should be in only one axis? Batao. No, right? Because straight line can be like this also, na? And it is just a straight line. So I can see the position, right? Can be in straight line. Okay, the motion can be in straight line with changing position in both x-axis, y-axis or all three axes. ठीक है, right? है ना? So ये समझना है कि straight line does not mean one dimension. ठीक है? Clear ये चीज, right? Okay. Now we know what is momentum. हाँ अर्जुन, वो एनसीईआरटी देता है रैंडम वैल्यूज, राइट? तो उसको तुम ध्यान मत दो, ठीक है? एनसीईआरटी क्वेश्चंस काफी रैंडम होते हैं कैलकुलेशन वाइज. You don't have to calculate, right? You just approximate, as simple as that. ठीक है? Approximate or it would be given. ठीक है? You don't have to worry about that, right? Okay. Then we talked about momentum. We know what is momentum. हम लोग step by step कर रहे हैं, step by step. ठीक है? Okay. Now, after this, I hope everyone know what is force. सबको पता है force क्या होता है, characteristics of force. So we have studied what is force, right? This is the revision of class 9th. हाँ है ना? Contact force, field force, right? है ना? Then I hope सबको इतना पता होगा. I'm just covering all the concepts so that you can make the mind map and you know कि से theoretical topics कौन से हैं और हमारे conceptual topics कौन से हैं. As I said, किसी भी चैप्टर में 10 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे. Okay, now basic characteristics of force. I hope ये सबको याद होगा, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हम लोग. Right? Okay, yes. Okay, very good. Right? Now, when we're talking about लॉज ऑफ मोशन, अभी हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन में. सो हम लोगों ने अभी एनसीईआरटी देखा कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है ना? सो सेम थिंग हमें जेई और नीट के लिए पढ़ना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. नाउ द ओनली डिफरेंस इज, हम जब बात करते थे नॉर्मल एनसीईआरटी में, राइट, हम जब नॉर्मल एनसीईआरटी बात करते थे तो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट मोशन, है ना? हम लोगों ने ऑब्जर्वर के बारे में तो सोचा ही नहीं. यस और नो? टेल मी, राइट? है ना कि भाई ऑब्जर्वर कहाँ है? Yes or no? ठीक है ना? जस्ट इमेजिन राइट कि दो लोग ट्रेन पे मूव कर रहे हैं, राइट, है ना? और दोनों लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं. सो ऑब्वियसली द मोशन ऑफ वन पर्सन रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन विल बी इन रेस्ट. यस और नो? हाँ या ना? रेस्ट में होगा. एग्री? यस. बट अगर यही अगर मैं एक पर्सन को लूं जो प्लेटफॉर्म पे बैठा है, so according to that person who is sitting on the platform, right, the motion will be in, or sorry, the position is changing, so the person would be in motion, right? So I can say according to the frame of reference, right, the frame of reference, the position might change differently, है ना? Now depending on that we have two type of frame of reference. ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक आइडिया था, but we can have two type of frame of reference, है ना? We know what is inertia, so there is one inertial frame of reference. So what is inertial frame of reference? Tell me, anyone? Tell me. Yes, exactly, OS, right? Exactly. Non-accelerating frame, है ना? अब जैसे देखो, तुम मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, है ना? एंड योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज नॉट इन एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेटेड नहीं है, then it is called as inertial frame of reference, as simple as that, right?
Yes. Okay, so I can say, right, frame of reference in which only the forces acting on the body can be responsible for any acceleration, right? है ना? ठीक है? So these frames of reference are called as inertial frames. Okay, right? ठीक है? So ये पता होना चाहिए सर, accelerating और non accelerating. अगर accelerating है, right, then non inertial, accelerating नहीं है तो inertial. Easy? ठीक है? Easy? Clear? बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिकॉज हम लोग जब सूडो फोर्स की बात करते हैं ना, स्पेशली जब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तब हमको ये कॉन्सेप्ट आता है. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वी हैव डिस्कस्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? सो देखोगे सर यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक एनसीईआरटी में जो पढ़ा था हम लोगों ने वही पढ़ा था. The concept is this, free body diagram. अब यहाँ से हमारा actual concept start होता है. So what is free body diagram? Can anyone tell me what is free body diagram? Can anyone tell me what is free body diagram? Wait, I'll just ask someone. Siddharth, tell me. Siddharth? Very good, Riya. Correct. Yes, Imba. So I can say this is the most important concept of NLM. अगर ये किसको आता है ना, तो NLM का आधा concept उसको आता है, right? Because if I ask you what are the two concepts, what are the two concepts that is very important in NLM, or which is must in any kind of problems in NLM? Tell me. First is your free body diagram and second is resolution of factors. As simple as that. अगर ये दो किसी को आता है ना, तो उससे almost सारे questions बन जाएंगे. Yes, very good. Now let's see what is FBD, free body diagram, right? So I'll just use example. ठीक है? Instead of just going through theory, just talk about some concepts. ठीक है? Now I'll just take very basic concepts, very basic example जो सबको पता होगा, पुली वाला, right? है ना? Or should I take okay, I'll take a wedge one because पुली वाला सबको समझ में आता है. पुली तो क्या है? पुली तो बच्चे लोगों को समझ में आता है, राइट? है ना? पुली तो हम लोगों ने क्लास 7th वालों को पढ़ा दिया है. चलो तो वेज लेते हैं, राइट? सपोज आई एम हैविंग दिस वेज. ओके, सो इट इज अ डबल वेज. ठीक है, इट इज अ डबल वेज. मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ प्रॉब्लम ताकि तुम लोगों को अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आए. नाउ आई विल जस्ट यूज अ पुली आल्सो. मैं यहाँ पे एक पुली भी लगा दूंगा, right? Okay, and I'll keep a mass here and a mass here. ठीक है, ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया हमारा M2. And let's take this, right? और ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2. And let's make this as surface with having friction μ1, right? And surface same है तो इसका μ1 रखो. ठीक है. Now आई होप ये सबको समझ में आता है. मैकेनिक्स दिखना चाहिए. ठीक है, मैकेनिक्स इज स्पेशली दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स जो तुमको दिखना चाहिए. आंख बंद कर तुमको सब कुछ विजुअलाइज होना चाहिए, भाई हो क्या रहा है. मैकेनिक्स जिसको दिखता है उसके लिए फिजिक्स इजी होता है, राइट? दिस इज माय पर्सनल सजेशन. मैकेनिक्स जिसको दिखता है उसके लिए मैकेनिक्स इजी होता है, जिसको नहीं दिखता है उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, राइट? ठीक है, because this is something that you can visualize. How many of you agree with this, that mechanics is something that you can visualize? और जिसको विजुअलाइज हो जाता है उसके लिए इक्वेशन लिखना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है ना? यस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट M1. हम लोग सिर्फ M1 की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, राइट? M1 की बात कर रहे हैं. नाउ व्हेन टॉक अबाउट M1, बताओ कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं M1 पे? एवरीवन टेल मी व्हाट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन M1, स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले तो बहुत बेसिक वन जो हमें पता है, सर सबसे पहले तो हम mg लेंगे, mg. और वी नो देयर आर सम फोर्सेस जिसका डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ऑलवेज सेम होता है. जैसे कि mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड. यस और नो, mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड. डजंट मैटर तुम कैसा भी ले लो, mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड, राइट? सौम्या, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बहुत बेसिक. mg cos थीटा mg sin थीटा मत लो, सिंपल डायरेक्शन. कंप्लीट बाद में तोड़ेंगे, है ना? राइट? mg is always downward.
राइट नाउ सेकंड फोर्स जो हमें पता है सर सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा लगता है मेरा नॉर्मल, राइट? सो दिस नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका डायरेक्शन तो यही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए डायरेक्शन नहीं चेंज होने वाला है ना? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस स्टेप बाय स्टेप। ओके नाउ थर्ड इज टेंशन। सर टेंशन तो हमेशा ऐसे ही लगेगा सर, और कैसे लगेगा? टेंशन तो हमेशा से लगेगा, राइट? ये तीन तो फिक्स्ड है, इसका तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो ऐसे होगा। सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है, राइट? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ mg normal and tension is always fixed, right? Normal is always perpendicular to the surface, mg is always downward, right? है ना? It has nothing to do with the surface and tension is always along the wire. Okay now अब इसमें एक और फोर्स लग रहा है which is your friction force, yes or no, right? है ना? And we know that sir friction force का डायरेक्शन क्या होगा? Opposite to the tendency of motion. Agree? Yes or no? Opposite to the tendency of motion. सर आपने तो m1 m2 दिया ही नहीं है, राइट? आपने थीटा वन थीटा टू दिया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है, राइट? है ना? हमें कैसे पता चलेगा? एग्री, राइट? हमें नहीं पता चलेगा ना। सो हम बोलेंगे ठीक है, assume that m1 is greater than m2, हम लोग मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे, और we will assume that m1 is moving in this direction, m1 is moving in this direction, ठीक है, राइट? है ना? बिकॉज अगर सही हुआ तो एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर गलत हो गया तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, और तो कुछ सोचना ही नहीं है कि नहीं? हम लोग मान लेंगे, अगर हमारा माना हुआ सही हुआ तो एक्सप्रेशन डायरेक्शन राइट सेम होगा, तो एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। मान लो कि गलत हो गया तो एक्सप्रेशन का डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगा, व्हिच मींस सर हमने जो माना उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन है ना? ठीक है, राइट? So I'm assuming that acceleration is in this direction. So acceleration is a1, step by step, हमेशा step by step. So अगर acceleration इस direction में है, motion इस direction में है, so this friction will be in which direction? Friction will be in which direction? Tell me. Don't you think that, sir, it is always opposes the tendency of motion, right? Tendency of motion. So it will be in this direction. हाँ या ना? हाँ या ना? सर m1 पे तो सारे फोर्सेस हो गए, m1 पे तो सारे फोर्स हो गए, चार फोर्स लगे, चार फोर्स का डायरेक्शन हमने बता दिया है। एग्री? टेल मी, एग्री? यस और नो? सो आई होप कि m1 पे सारे फोर्सेस समझ में आ गए होंगे, है ना? सो लेट्स ड्रॉ वंस, ठीक है ना? ओके, सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, राइट, एक छोटा सा ना, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कंफ्यूज नहीं होने का, राइट? एक छोटा सा एक्सिस बना लो साइड में, जब भी रहे ना तो एक छोटा सा एक्सिस बना लो। ओके, लेट्स मेक दिस एक्सिस, राइट, है ना? और इसके सेंटर पे ये मास रख लो, सपोज दिस मास इज ऑन द सेंटर, राइट, ऑन द सेंटर, ये भाई हो गया तुम्हारा मास m1, ठीक है ना? थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ना। ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ना, जितने भी फोर्स की डायरेक्शन है सबको एज अ वेक्टर ट्रीट करो, बिकॉज ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर, राइट? स्टेप बाय स्टेप। तो बताओ यहाँ पे mg का डायरेक्शन किधर है? if you take this point, if you take this point as origin, right, this point as origin, mg किस डायरेक्शन में है? टेल मी, स्टेप बाय स्टेप, एक क्वेश्चन करेंगे फिर आंसर सीखेंगे। mg डायरेक्शन किधर है? बताओ सबको ही, अपने से अपने नोटबुक में बनाओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ mg? नेगेटिव वाई एक्सिस, नहीं समर्थ, नेगेटिव वाई एक्सिस ना, नीचे की ओर सर, नीचे की ओर देखिए सर, हमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है अभी। सर mg नीचे, तो mg नीचे है, और कोई दिक्कत नहीं है सर, mg नीचे, बाकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आता ही है, राइट? नेगेटिव वाई एक्सिस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ना, वेज इस थीटा एंगल पे है, वेज इस थीटा एंगल पे है, व्हिच मींस ये जो फ्रिक्शन और टेंशन है दोनों थीटा एंगल बना रहा है, राइट, है ना? दिस इज योर फ्रिक्शन, है ना? एंड लेट्स टेक दिस रेड वन, ग्रीन वन, सॉरी, दिस इज योर टेंशन, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। एग्री? हाँ या ना? एग्री?
सर दोनों तो ऐसे ही लग रहे हैं सर, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों का सेम होना चाहिए, और ये θ1 एंगल होना चाहिए बिकॉज सही एंगल θ1 है। तो अगर यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमें पता है, लाइन का कॉन्सेप्ट पता है, परपेंडिकुलर है सही पैरेलल है ये, तो ये अल्टरनेट राइट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सो θ1, सो दिस इज क्लियर है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस नॉर्मल, वी नो सर नॉर्मल जो होता है वो इसके 90 डिग्री पे होता है, राइट स्टेप बाय स्टेप। नॉर्मल जो है सर वो इसके 90 डिग्री पे है, तो नॉर्मल ऐसा हो गया नॉर्मल, राइट। सबको समझ में आया ये, हाथ उठा लो, सबको समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप बिकॉज एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया है, राइट ठीक है ना। तुमने से कोई पूछेगा सर जरूरी है मैं ऐसे लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जरूरी है क्या, राइट हम लोगों ने तो पढ़ा था कि हम लोग दूसरा एक्सिस भी ले सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू टेक दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इज इट नेसेसरी टू टेक दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? नो इट्स नॉट नेसेसरी, राइट है ना, बिकॉज वी नो कि सर हम कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, द ओनली थिंग इज दोनों एक्सिस राइट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इजी है ना। ना डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एक्सिस लेने से हमें कन्वीनियंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस वेज को ही एज एक्स एक्सिस मान लें, इस वेज को ही एज एक्स एक्सिस मान लें और इसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लें, राइट लेट्स अज्यूम दिस है ना, ठीक है अज्यूम दिस। स्टेप बाय स्टेप सब कोई सोचेगा because doesn't matter which axis you are using, either you are using this axis or you are using this axis, you should get same solution है ना, right agree हाँ या ना, tell me हाँ या ना, because sir concept तो same है ना, हम लोग बस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, that's all we are doing, right? So let's see अगर हम ये एक्सिस ले रहे हैं, ये एक्सिस ले रहे हैं, okay so I'll just take everything from here, right these points ले लूंगा मैं। so ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ टेंशन सेम डायरेक्शन, ये हो गया तुम्हारा mg और ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ऊपर की हो गया तुम्हारा नॉर्मल okay now tell me which axis is convenient to use, this one or this one? सब कुछ सोच के बताओ कौन सा एक्सिस कन्वीनियंट है, नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस और वेज के लॉन्ग वाला एक्सिस, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सोचेगा। सेकंड वन मेक सेंस ना, राइट मेक सेंस। सेकंड वन खुशी प्रद्युमन एवरीवन आर्यन ओवैस मीत अक्षय अनुराग सुलिता कोशी प्रियंका सिद्धेश है ना, okay very good so I can say okay sir right obviously this is easier why because sir यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मुझे तीन कंपोनेंट को तीन वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सबको पता है ना भाई क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टेल मी। आई होप सबको पता है राइट सर, फैंसी नाम है कंपोनेंट में तोड़ने को राइट है ना, breaking into component right, breaking a vector into component, ठीक है x और y कंपोनेंट में तोड़ देना है, as simple as that, simple right, एक फैंसी नाम दे दिया गया है कंपोनेंट में तोड़ने को राइट। आई होप सबको ये तो आता है, ये तो आता है सबको, इतना मेहनत किया तुम लोग एक साल, ये तो आता होगा है ना, राइट ओके ना। नहीं आता है तो हम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग दोनों को ले रहे हैं I'll take both the axes, right? And I'll try to break into component. Okay. Yeah, not 1080 resolution. Right? ठीक है, चलो हम पहले लेते हैं ये वाला केस xy axis, normal xy axis, normal xy axis, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेंगे हम, सबको ही स्टेप बाय स्टेप करेगा। पहला फोर्स F है, फ्रिक्शन, दिस इज फ्रिक्शन, राइट? F इज फ्रिक्शन, I'll just write FR. So फ्रिक्शन है ना, वेक्टर फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट होगा भाई, ये जो होगा मेरा फ्रिक्शन होगा F मैग्नीट्यूड F इज मैग्नीट्यूड F व्हिच इज म्यू n। आई होप सबको पता है ना फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड म्यू n होता है
तो ये हो गया भाई cos θ1 i कैप प्लस f sin θ1 j कैप। क्यों? अरे भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव, काम खत्म है ना, राइट ना। टेंशन भी यही होगा, टेंशन इज t cos θ1 i कैप प्लस t sin θ1 j कैप, राइट ना। थर्ड mg, अरे सर mg तो एक ही डायरेक्शन में है, mg तो इट्स mg माइनस j कैप, एज सिंपल एज दैट, और तो कुछ है ही नहीं। व्हाट अबाउट नॉर्मल? नॉर्मल ना, नॉर्मल क्या हो गया? नॉर्मल वेक्टर, राइट, इट इज f mg, ठीक है। नॉर्मल का दो कंपोनेंट सर, बट हमको एंगल कैसे पता चलेगा? इजी है ना, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है, सो दिस शुड बी 90 माइनस थीटा। एग्री? हाँ या ना, राइट। सबको इतना तो आता होगा, ज्योमेट्री क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हम लोग, है ना, राइट। सो इफ इट इज थीटा 1, दिस इज 90, राइट, ठीक है। सो दिस शुड बी 90 माइनस थीटा 1 बिकॉज सबका सम 180 होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो सर ये तो हो जाएगा मेरा n, right, x-axis n cos 90 minus theta 1. Now here it is negative x-axis, so minus I cap plus n sin 90 minus theta 1, so positive y-axis, so j cap, right? एग्री? सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये किसको आता है ना, तो उसका आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। और बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है। Whenever you encounter any problem in NLM, the first thing that you should do, तुमको फोर्स दिखना चाहिए, राइट, रेड लाइन ब्लू लाइन से दिखना चाहिए कि कैसे कैसे फोर्स लगता है ना। देन सेकंड, तुमको कॉम्प्लीमेंट तोड़ना आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। बाकी कुछ नहीं रखेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये तो हो गया सर इसका। व्हाट अबाउट दिस, राइट, इसका क्या करेंगे हम? कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्व करेंगे हम, ऐसे लेंगे, राइट। सो वेज एक्सिस पे लेंगे तो ठीक है ना। ये तो सर सिंपल है ना सर, राइट। ये थीटा 1 है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा और ये आपका थीटा 1 हो जाएगा। एग्री? इतना तो ज्योमेट्री पता है ना, इतना तो ज्योमेट्री पता है, यस और नो? यस, राइट। सर 90 डिग्री, सर ये थीटा 1 हो गया, ये 90 है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा 1 हो गया। इतना तो ज्योमेट्री पता होना चाहिए। इसमें भी कुछ लोग गलत करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ लोग गलत करते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल गलती है ही नहीं, वो तो लाइक 7th 8th का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत है ना। साइकिल से ओके ना। अब इसमें तोड़ो सर, टेंशन फ्रिक्शन नॉर्मल तो सेम है। टेंशन इज व्हाट? टेंशन इज इक्वल टू, राइट, व्हाट, टी आई कैप, क्योंकि हम इसको एक्स एक्स मान रहे हैं, उसको वाई एक्स मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे आई कैप देना गलत होगा बिकॉज इट विल गिव अस अ फॉल्स idea that is x axis, right? But I'm considering this as a I dash cap, right? समझ लो, ठीक है। It just says that this is along the wedge, ठीक है, इसलिए हम I dash दे रहे हैं, it is not actually x axis। सबको समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ रहा है ना। So I'll just say this is x dash and this is y dash, ठीक है। Agree? Okay, now what about t? So this is t, friction is also, right, a mu n, okay, mu n I dash. What about normal? Normal is n j dash. सर कितना सिंपल लग रहा है सर, राइट, कितना सिंपल लग रहा है, एक फोर्स है, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो, राइट। अब बचा mg, so it is f mg, राइट। नाउ ये देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? टेल मी व्हिच इज दिस क्वाड्रेंट? ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, है ना, राइट। सो x डैश में क्या हो गया? mg sin थीटा माइनस आई कैप, है ना, प्लस mg cos थीटा माइनस j कैप। क्यों सर? ये एंगल थीटा 1 है सर, ये एंगल थीटा 1 है, तो इसका कंपोनेंट जो इस साइड हो रहा है, राइट, दिस रेड कंपोनेंट इज mg cos थीटा 1, राइट, एंड दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा 1। हाँ या ना? टेल मी, हाँ या ना? राइट, क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? ओके, now
अब तुमको समझ में आओगे व्हाई दिस इज इजियर, बिकॉज अगेन सर सिंपल है, कैलकुलेशन काफी सिंपल है, यहाँ पे काफी ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे काफी कम कंपोनेंट्स हैं। ओके सो कोई भी क्वेश्चन पूछा आता है, कैसा भी क्वेश्चन पूछा आता है, the only thing that will change is the nature of force, that's it, और कुछ नहीं चेंज होने वाला है। ओके राइट यस सो दिस इज स्टेप वन। सबसे पहले हमें ये करना है, सेम वे M2 पे बना लोगे है ना, M2 पे सेम वे से बन जाएगा। एंड आई गेस कि दिस इज मीडियम लेवल प्रॉब्लम, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट वेरी इजी आल्सो, है ना, बट ये बन जाएगा। एंड आई होप all of you know that we are not going to discuss very difficult problem in this class, normal class, revision class, right? जिसको difficult problem discuss करना है, रात के 9 बजे प्राइम टाइम हमारा है, ठीक है, रात के 9 बजे ट्यून इन करो, ठीक है, सेम चैनल, राइट? तो रात को हम लोग डिस्कस डिफिकल्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके नाउ दिस इज कॉन्सेप्ट 1, व्हाट इज कॉन्सेप्ट 2? नाउ दिस इज कॉन्सेप्ट 2। सर इतना तो हो गया, उसके आगे क्या, राइट? उसके आगे क्या सर? इसके आगे सिर्फ वेक्टर का काम होगा, हमें यूज करना है कॉन्सेप्ट किसका? फोर्स का, व्हिच मींस द फोर्स शुड बी बैलेंस्ड, राइट, है ना। वी विल यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। आगे में लॉ, भाई व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? टेल मी व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? नहीं वैस आई डिडंट राइट दैट। What is Newton's second law? Tell me. Net sum of all the forces is equal to mass into acceleration. Yes or no? As simple as that, right? है ना? Okay. But we won't be using that. We will be using not exactly that, but what we will be using is, I'll just say net sum of all the forces in same direction. समझ में आया? समझ में आया? Yes or no? Which means summation of f of x should be equal to m into ax. Summation of f of y should be equal to m into a of y. Agree? हाँ या ना? राइट, ये कॉन्सेप्ट है। हम सबको एक साथ नहीं जोड़ेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, हम उसको तोड़ तोड़ के जोड़ेंगे, है ना, राइट? क्लियर है? राइट? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? सबको ये समझ में आ रहा होगा कि सर इसके बाद कैसे क्या करेंगे। अब जैसे देखो, मान लो तुम इसको यूज करते हो, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो मुझे पता है एक्स में कौन कौन सा है, सर एक्स में ये है, ये है, ये है, राइट, है ना। सो वी हैव दीज फोर्सेस, right? This is the component of x, this is the component x, and this is the component of x. So sum of all the three should be equal to sum m into acceleration in x. Agree? Yes or no? Right? So let's rewrite this. So I can say it is f cos theta. मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, केस 1 वाले को, केस 1. I'll just write केस 1. Okay? केस 1 का इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं दोनों केस का लिखूंगा, पहले केस 1 का लिख रहा हूँ. So it will be what? केस 1 का इक्वेशन फ्रिक्शन है ना, तो f को मैं फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट कर, सॉरी फ्रिक्शन को f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. f cos थीटा प्लस t cos थीटा 1 प्लस माइनस n sin थीटा, है ना. सो राइट, लेट्स राइट दिस. f cos थीटा 1 प्लस t cos थीटा 1 माइनस n sin थीटा 1 इज इक्वल टू m into ax. हाँ या ना? यस और नो? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, और कुछ नहीं किया हमने, राइट. न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट वही लिख दिया, इजी है. ओके, नाउ वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? तो सर ये तो आपने एक्स में कर दिया, वाई में फिर करेंगे, है ना. वाई में करेंगे, वाई में क्या है, ये है, ये है, ये है, और ये भाई साहब भी है ना, राइट. सो लेट्स सी. सो दिस इज एन एक्स एक्सिस, वी हैव टू राइट एक्स एक्सिस में फोर्स बैलेंस कर रहा, राइट. फिर वाई एक्सिस में फोर्स बैलेंस करेंगे. तो क्या है वाई एक्सिस में? एफ साइन थीटा, टी साइन थीटा, ये ग्रेविटी वाला भी है और ये भी है. सो लेट्स रीराइट.
f sin थीटा 1 प्लस t sin थीटा 1, और ये ग्रेविटी वाले भाई साहब निगेटिव में है, राइट, हमेशा निगेटिव रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, माइनस mg, है ना, अपोज ही करेंगे सर, राइट, किसी ऊपर चढ़ने नहीं देंगे, देन दिस इज n cos theta 1, है ना, बिकॉज sin 90 minus theta is cos theta. Now this should be equal to m into ay, right? Yes or no? सबको समझ में आया ये? Okay, right? हम बस इक्वेशन लिख रहे हैं, बस इक्वेशन लिख रहे हैं, अभी और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये तो सर, ये तो आपने ये वाला इक्वेशन लिखा, ना दिस इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू सॉल्व। सर देख रहे हो सर कितना ज्यादा फोर्सेस आ गया है, 3 फोर्स है x में, 4 फोर्स कॉम्पोनेंट है y में, राइट, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट तो लग रहा है सॉल्व करने में, है ना, और हमने तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से पढ़ा नहीं है, राइट, इसलिए नहीं सॉल्व होता है। जिसने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा अच्छे से, उसको सॉल्व हो जाएगा इजीली, राइट। नाउ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल होने चाहिए। Now, if you think from the teacher point of view, right, how many variable do we have here? Tell me, how many variable do we have here? Think about it. Sir, tension, right, theta हो गया, mass हो गया, right, है ना, इतने सारे variable है, so मुझे 2 को छोड़कर बाकी सब दे दिया जाएगा, या मुझे निकालना पड़ेगा। I cannot have more than 2 variables to solve this. Yes or no? Tell me. Because I will get only 2 equations, and we know that linear equation to variable solve कब होता है? जब मेरे पास सिर्फ 2 variable, अगर तीसरा variable है, so there must be some other equation, right? वो दिमाग में होना चाहिए, random नहीं solve करना है। Okay, now case 2 कौन सा? सर ये वाला equation, ये वाला वेज एक्सिस। यहाँ पे तो काफी सिंपल है ना, राइट, आई में ये है आई डैश में, तो लिखते हैं, राइट, इन x डैश एक्सिस, राइट, x डैश एक्सिस में क्या हो गया सर? ये है सर, टेंशन है सर, फ्रिक्शन है, राइट, और sorry, disconnected as usual, internet issues, right? Now, yeah, my question is this M1, right? It will be Superman or Batman, right? ये उड़ेगा नहीं ना, tell me, can it fly? ऐसा होगा कि सर ये उड़ के जाएगा, ऐसे उड़ के जाएगा, y एक्सिस पे उड़ेगा, राइट, नहीं ना, ये तो सिर्फ ऐसे स्लाइड करेगा x एक्सिस में, yes or no? हाँ या ना बताओ, x डैश एक्सिस में, टू वेरी फ्रैंक, yes or no? इमेजिन सर इसमें ये तो ऐसा नहीं होगा ये जंप करके जाएगा, ऐसा होगा क्या कि ये कूद के जा रहा है, मारियो बन गया है। How many of you remember Mario? I hope boys might remember Mario, है ना, right? Yes. So what can I say? Again, physics है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, right? So can I say, सर ये जो y एक्सिस है, जो y डैश एक्सिस है, इसमें तो ये नहीं मूव करना चाहिए, है कि नहीं? Tell me, yes or no? बेसिक कॉन्सेप्ट, सर y में तो नहीं मूव करना चाहिए, मारियो तो नहीं है कि कूद के जाएगा, राइट, है ना, yes or no? Right? So if it will not move, wait everyone, wait. I guess I'm audible, right? Apologies. Whenever I get a call, I get disconnected. Okay, right? Yes. Huh. So what can I say? Tell me, what can I say? Can I say, sir, since this mass m1 will not move in y-axis, its acceleration in y dash axis, this y dash axis, right, should be 0. Yes or no? हाँ या ना? सोचो, सही है कि नहीं? Right? Everyone. खुशी, कोशी, प्रद्युमन, स्नेहा, सिद्धेश, विवेक, अनामिका, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? बिकॉज इसी में दिक्कत होती है तुम लोगों को, एनएलएम क्वेश्चन नहीं बनता है बिकॉज यही नहीं समझ में आता है ना, राइट? सर तो ठीक है सर, ये
y में नहीं मूव है, बट ये तो x एक्सिस का है, so it should be m into ax dash, right? What about y axis? Y axis is this, normal है, और mg का ये वाला component है ना? So I'll just write like this. In y dash axis be normal minus mg cos theta is equal to m a y dash. Now this is 0 because a y dash is 0. Yes or no? ना अब बताओ, लग नहीं रहा है सर कितना सिंपल, ऐसा सुंदर सा इक्वेशन आ गया सर, ये 0 हो गया, n इज इक्वल टू mg cos थीटा आ गया, राइट? है ना? है ना? और सर मुझे पता है फ्रिक्शन इज इक्वल टू μ1 होता है, राइट? तो मुझे यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया, राइट? क्लियर है ना? I'm just writing the equation. ये क्वेश्चन इजी नहीं है because again second mass है मेरे पास, there is second mass. Okay, but I'm just trying to write the equation. बाकी सॉल्व करना तो बाद का काम है, हमें इक्वेशन लिखना आना चाहिए. सबको इक्वेशन लिखने आया? हाथ उठा लो. सबको इक्वेशन लिखने आ गया? किसी को भी दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में? Because after this the only concept you have to remember is how to solve equation. फिर वो मैथ्स हो गया है. अगर नहीं बन रहा है तुम्हारा मैथ्स वीक है, फिजिक्स वीक नहीं है, right? You cannot blame physics teacher, you blame maths teacher, right? You should not blame anyone. I'm just joking. ऐसा नहीं है कि ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये सब? ये कॉन्सेप्ट को क्लियर है? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट. हाँ है ना? इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है इसमें? हम लोग एक दो सिंपल सिंपल सवाल करेंगे, राइट? ओके ओके, सो लेट्स सॉल्व सम सिंपल प्रॉब्लम्स, राइट? बच्चे वाला सॉल्व करेंगे, है ना? ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस. पता ही होगा आई गेस, सबको पता होना चाहिए ना, टेंशन फोर्स क्या होता है, mg क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, राइट? ठीक है, सो ये सबको पता होगा आई गेस, सबको ये पता होगा, राइट? पुली करंट फोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. जैसे ये देखो, ये डायग्राम देख लो, सी दिस डायग्राम, राइट? सी दिस डायग्राम, है ना? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, राइट? हमें एफबीडी बनाना होता है. यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 तीन जगह पे कांटेक्ट है, राइट? एंड व्हेन वी हैव कांटेक्ट देयर शुड बी कांटेक्ट फोर्स एंड दैट कांटेक्ट फोर्स इज नॉर्मल, राइट? है ना? और जो एक और गलती होती है लोगों से, मैंने नोटिस किया है ना, एफबीडी बनाते हैं हम लोग, जब भी एफबीडी बनाते हैं, व्हाट ऑल फोर्सेस डू वी टेक? टेल मी, कौन सा फोर्स लेते हैं? टेल मी, कौन सा फोर्स लेते हैं? We take the force which is acting on the body, not acting by the body. Yes or no? Yes or no? Right? Yes, Jashan, very good, right? We take the force which act on the body, है ना? Right? Clear है? इस पे जो लग रहा है ना? Okay? Okay, next. So this is clear, I guess. इसका समझ में आ रहा होगा सबको? We have 3 normal forces over here because we have 3 point of contact, right? Okay. Now spring force सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा अब तक. एसएचएम हम लोगों ने किया है, I guess एसएचएम काफी ढंग से किया है, सबको स्प्रिंग फोर्स तो आता होगा. हाँ या ना? हाँ या ना? Right? Okay. So now whenever we talk about type of forces, we just generally encountered tension force, friction force, normal force, spring force and mg, है ना? NLM में तो यही आता है ना, इसके अलावा कुछ आता है क्या? Generally, I'm not talking about the higher level problems, I'm just talking about the general problem, right? Because अगर घुसाना होगा तो मैं तो कोई भी force घुसा दूंगा, doesn't matter, right? I can use drag force, I can use electrostatic force, magnetic force जो 12th में आएगा, but अभी इस चैप्टर के लिए तो हमें बस यही forces है ना? Now there's very important concept, right, which is called as Lamia's theorem. ठीक है? Now मैथ्स वाले बच्चों को काफी इजी होगा, राइट, समझना, बिकॉज उन लोगों को शायद साइन रूल ऑलरेडी पता है कि नहीं? हाँ चालू, टेल मी यस और नो, राइट? सो व्हाट इज Lamia's theorem?
So this is a very, very specific theorem, right? It is only applicable if you have three forces. ठीक है, तीन force हैं. Think about it. Suppose I'm having three forces which are acting, right, on a point, or right, okay, or from a point. ठीक है, doesn't matter because you can shift any vector parallelly. ठीक है. Now, if the angle between these are alpha, beta, gamma or ABC, पैरेलली शिफ्ट कर सकते ना. देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या डिफरेंस है बताओ. ये डायग्राम में क्या डिफरेंस है. इस F1 वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, इस F3 वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आओ. बन गया कि नहीं ये डायग्राम? हाँ या ना? टेल मी. बन गया कि नहीं? राइट. सो ये और ये एक्चुअली सेम है, ये और एक्चुअली सेम है. राइट. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके. yes OS. ठीक है. So I can say there's a theorem of trigonometry which says if I'm having a triangle, any triangle, doesn't matter, it should be a right angle triangle, right? And the sides are A, B, C. So this is A, suppose this is A, this is B, and this is C, right? And the angle opposite to A is alpha, the angle opposite to B is beta, the angle opposite to C is gamma. Okay, so I can say A by sine A, right? This is sine A is equal to B by sine B is equal to C by sine C. This is general sine theorem. This is your sine rule, है ना? ये sine rule है. But if I'm using these vectors, okay, I can say so F1 is acting as your A. Now यहाँ पे F1 मतलब magnitude है F1, ठीक है? इसका magnitude, ठीक है? Because this is your what? Distance ना, है ना? ये तो क्या है? Side है, side का length है. So I will write F1 by sine opposite angle alpha, जो लिखा हुआ यहाँ पे. Then F2 by sine beta, F3 by sine gamma. Yes or no? Right? अब बताओ सर इसका फायदा क्या है? Tell me. Why? What is the use of this? What is the use of this? सर तीन फोर्स रहेगा तो वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा. Otherwise we can solve using वेक्टर ऑल्सो. कॉम्प्लीमेंट ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, राइट? उससे भी हो जाएगा. बट ये कंपैरेटिवली इजी कर देगा सॉल्व करना हमारा. हाँ या ना? दैट्स इट. दैट्स द ओनली थिंग. दैट्स द ओनली प्लस पॉइंट ऑफ दिस, राइट? है ना? दैट इज द ओनली मेरिट ऑफ दिस लामीज थ्योरम, दैट हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी कर देगा. अदरवाइज अगर लामीज थ्योरम नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है. हमको वेक्टर रेजोल्यूशन पता है, ब्रह्मास्त्र है एनएलएम का वेक्टर रेजोल्यूशन, राइट? ठीक है. I hope all of you at least know Mahabharata and Ramayana, right? Brahmastra. ठीक है. So you can just break this into component. F2 को तोड़ देना x5 में, F3 को तोड़ देना x5 में और इक्वेट कर लेना, आ जाए तुम्हारा. बट लामीज थ्योरम से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा बिकॉज यू हैव दिस रेडीमेड रिलेशनशिप. ठीक है. ओके, क्लियर, राइट? सबको समझ में आ गया? बच्चे वाला एक सवाल करें, राइट? एनसीईआरटी लेवल बच्चे वाला एक सवाल करते हैं. ठीक है, चलो एक बच्चे का सवाल कर लो, राइट? वैस आर्यन, तुम लोग ये तो शायद बहुत बच्चे वाला हो जाएगा, बट या और if you talk about NLM, this is the actual concept of NLM. बाकी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है. एग्री और नॉट? टेल मी. तुम लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा तो नोटिस कर पाओगे सर ये तो मेन कॉन्सेप्ट, बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, राइट? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हो जाएगा. ये दिस इज द मेन ट्री, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन होंगे, राइट? पुली वाला कॉन्सेप्ट, राइट? एवरीथिंग, है ना? फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट सब ऐड ऑन होगा. Inertial, सब ऐड ऑन होगा. Everything is add on. Okay, easy, done, very good, है ना? Very good. So it's easy, I guess. सबको बन गया होगा, है ना? Let's see. Okay, very good. So everyone just check your answers because ये बहुत easy था, है ना?
Now this one, solve this one. I hope सबको पता ना that spring force is equal to kx, right? है ना? Easy, clear. So free body diagram बन गया होगा सर, ये free body diagram, right? Equilibrium में है means kx जो f है वो kx के बराबर होगा, है ना? right? बाकी तो थ्योरी है. ओके, सो एक अच्छा सवाल कर लेते हैं इसमें, ठीक है? एक अच्छा सवाल कर लेते हैं, लाइक कंपैरेटिवली अच्छा, नॉट दैट अच्छा, ओके, तुम लोगों के लेवल का लिए अच्छा. नाउ solve this, everyone solve this. ये ट्राई करो सॉल्व करने का. राइट, खुशी 100 नहीं 10 10 10, खुशी 100 नहीं 10, ठीक है? देखो, इफ इट फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने बोला फर्स्ट स्टेप शुड बी फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये ऑलरेडी 10√3 न्यूटन दिया हुआ है खुशी, राइट? यहाँ पे जी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना? दिस इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज 10√3 mg दिया हुआ है. नाउ दिस इज टेंशन 1, दिस इज टेंशन 2, राइट? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर और एक इस डायरेक्शन में. That's all you have to do, yes or no, हाँ या ना. This is your free body diagram. Agree? Figure 1 के लिए this is your free body diagram, right? Clear है? So if you balance this, this is T2 cos 60 degree, this is T2 sin 60 degree. So T2 sin 60 degree is equal to 10√3 because it is not moving ना, acceleration 0 हो गया. It's not moving, it is in equilibrium, right? Agree? So if you balance, you will get T1 as 10 and T2 as 20 newtons. Yes or no? हाँ या ना? सबको समझ में आ गया? ये इजी है. राइट? खुशी, खुशी, everyone? Okay? Okay. Now this is part A. What about part B? What about part B? Tell me. What about part B? Solve part B now. Everyone, solve part B now. Part A सबको समझ में आ गया है ना? So B part solve करो. Step by step B part solve करो. If you see the free body diagram of second one will be like this, right? Now we have the component of T1 also, right? Clear? This is theta. That is unknown. But I can write T1 in terms of theta. So T1 cos theta is equal to 10√3 and T1 sin theta is equal to this component. Sorry, T1 cos theta plus T2 sin theta, sin 30, right, is equal to this. So break into the component, both the tensions and equate it. Okay, right? See, as I said, right? See. So if you talk about x-axis, so T1 sin theta is equal to T2 cos 60 degree. है ना? Yes or no? Yes or no? Right? And if you equate the y-axis, I'll get T1 cos theta, this component, T2, this component, right? Will be T1 cos theta, and this component will be T2 sin theta is equal to 10√3. Now, अब एक चीज बताओ यहाँ पे, how many variables do you have? Tell me, what do you think? How many variables do you have? Because T2 is okay. Now, suppose if you have to write in terms of theta, then if you have to write in terms of theta के term में ही आंसर चाहिए, then
Two variable, yes or no. First we have to do like this, yes or no, right? Step by step. First हमें theta के term में ही चाहिए. Then we have two variable t1 and t2. Can you solve for t1 and t2 in terms of theta? Can you solve for t1 and t2 in terms of theta? Yes or no? Yes, right? Just substitute the value of this t1 from this equation to this equation, or substitute the value of t2 from this equation to this equation, right? You can solve for t1 and t2 considering you know the value of theta. So if you solve, you will get the value of t1 as this, or according to question, right? For t1 to be minimum, you have to find the value of theta for which t1 is minimum. t1 का minimum value. Now यहाँ पे maths आ गया. This is for JEE students now. अब एक चीज बताओ, कोई भी नंबर है, right? You have two numbers x by y, right? And suppose if it is a by y, ठीक है? Z is equal to a by y. So z to be minimum, z to be minimum, y should be maximum. Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? ये बहुत ही basic concept है, right? 10th तक भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने. And how many of you know? How many of you remember this, sir? This is, sorry, sine theta plus cos theta, right, sir? आपने पढ़ाया है, sir, that this can be written as what? Tell me. Root of, this is a sin theta b cos theta. सबको याद है? नीट वाले students. याद है सबको? That this can be written as root of a square plus b square into sin theta plus phi. हाँ या ना? Yes or no? I hope सबको याद होगा ये. Everyone remember this? NEET students? Right? Now tell me, what is the maximum value of this? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए. नीट वाले स्टूडेंट्स नहीं पता तो जान लो. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1. वेरी गुड. पूरा वैल्यू समर्थ. I'm not talking about theta, I'm just talking about total value. 1. Yes or no? This is 1, right? Okay, right? है ना? So the maximum value of this term, is equal to what? Root of 3 square plus 1 square, which is equal to 2. हाँ या ना? Right? Step by step. नहीं समझ में आया पूछना. ठीक है? Right? Yes. So I can say, sir, sine theta plus phi, right? Or you can just write like this. Sir, this value root 3 sin theta plus cos theta is equal to 2. है ना? So मैं इसको solve कर दूंगा, sir. अगर इसको solve करूंगा, right? So I'll get what? Root 3 by 2. I'll just divide everything by 2 and 2. है ना? Sin theta plus 1 by 2 cos theta, right? So ये कितना है? What is this angle? Tell me, what is this angle? अगर इस cos में, this is cos phi into sin theta plus cos theta into sin phi. So this is, sir, ये तो 30 डिग्री हो गया ना? cos 30 डिग्री हो गया. cos 30 डिग्री into sin theta plus cos theta into sin 30 डिग्री. So ये हो गया हमारा sin theta plus 30 डिग्री. And as someone said, sir, इसको 1 होने के लिए इसको कितना होना चाहिए? 90. So theta plus 30 degree should be equal to 90 degree. So theta should be 60 degree. Clear है? सबको समझ में आया ये? हाथ उठा लो. नीट स्टूडेंट समझ में आया ये? Anyone have any doubt in this? Tell me. Okay, Nishita, I'll repeat. Right? So देखो यहाँ पे ना नीट वालों को दो दिक्कत हो सकती है. पहला दिक्कत ये हो सकता है a sin theta plus b cos theta, right, can be written as root of a square plus b square, sin theta plus phi, है ना? Where phi is equal to tan inverse. Tell me. बताओ. b by a, है ना? b by a. Okay,
राइट। सो यहाँ पे कितना है, √3 1 है। सो आई कैन से ओके सर, ओके ये तो हो गया, वैल्यू हो गया 2 हो गया, दिस इज 2, और इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा, राइट, बिकॉज फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन the angle should be 90 degree. So theta plus phi should be equal to 90 degree. Or what is this? Tan inverse b by a. B क्या है 1, a क्या है √3. So it is 1 by √3. बताओ tan phi is equal to 1 by √3. बताओ phi का वैल्यू क्या होता है? If tan phi is equal to 1 by √3, what is the value of phi? 30 degree. हाँ या ना? 30 degree. So theta plus 30 degree is equal to 90 degree. So theta is equal to 60 degree. Got it निशिता? ये मैंने दूसरे मिनट से बता दिया, बट समझ में आया निशिता तुमको? Yes. Okay. Right. So थोड़े बहुत मैथ्स की दिक्कत हो सकते हैं, है ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बट ट्राई टू नोट इट डाउन एंड सॉल्व. ओके, सो ये हमारा बेसिक है. अब हम आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस में, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. सो द फर्स्ट टाइप इज, now before moving to specific type of questions, I hope all of you know what is the meaning of constrained motion. किसको उसको पता है constrained motion? बताओ किसको उसको पता है constrained motion क्या होता है? हाथ उठा लो. राइट, है ना? आई गेस सबको पता, थ्योरी वेरी डिफिनेशन में नहीं देने वाला, मैं बस समझा रहा हूँ. सो आई कैन से ओके, इन कंस्ट्रेंट मोशन मींस if two objects, two bodies, right, are moving in such a way that, right, the motion of one body, okay, is affected by the motion of the other body, right, or if they move simultaneously because of some reason, right, then that kind of motion is called as constrained motion. Yes or no? Right? Yes or no? The most common example of this is pulley, mass pulley system, right? The most common example is this. So let's take example. Okay. Now हमारे पास अब ये सवाल है. So let's try to analyze this problem and try to solve, है ना? ठीक है. Now फर्स्ट कॉन्सेप्ट, हमेशा से एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग को रखना है. कभी भी कॉन्सेप्ट को इधर उधर नहीं करेंगे, एड ऑन करेंगे. समझ में आ रहा है अभिराम, एवरीवन? एड ऑन करेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फ्रेमवर्क शुड बी देयर. वी जस्ट एड ऑन द कॉन्सेप्ट्स, राइट. सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? सर फ्री बॉडी डायग्राम बना था. कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. कितने बॉडी यहाँ पे? 2 बॉडी है सर, ए और बी, बिकॉज पुली इज मासलेस सर. पुली को मासलेस बोल दिया गया है, तो ए और बी है. तो ए और बी पे फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा, हाँ या ना? राइट. Okay, now second concept. Sir, can I just take this whole system, right, instead of pulley and B as 2 different systems, can I take as this whole system? Tell me. Instead of taking pulley and mass B as 2 systems, I can take as whole system, because sir massless है ना sir, तो हम आराम से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, right? So instead of taking this as 2 different systems, I'll just take as one system. ठीक है. So ये रहा. सो मैं डायरेक्टली इसको F इज इक्वल टू mg लिख देता हूँ. F इज इक्वल टू mg लिख देता हूँ, डायरेक्टली वन सिस्टम में आता हूँ. ठीक है, राइट. इसको मैं हटा के डायरेक्टली इसको एज अ मास m रख देता हूँ. ठीक है, राइट, बिकॉज आई कैन डू दैट बिकॉज दिस इज मासलेस. सो दिस इज द FBD ऑफ ब्लॉक 1, दिस इज द FBD ऑफ ब्लॉक 2, राइट. इंस्टेड ऑफ पुली आई जस्ट से इट इज ब्लॉक 2. yes or no? Tell me, because this F is equal to mg. ओके, ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ये? ओके. नाउ यहाँ पे बोल दिया है सर इट इज एन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में सर यहाँ तो बहुत इजी कर दिया. इक्विलिब्रियम में है मींस नेट फोर्स इज 0 इन ऑल द केसेस. यस और नो? यस और नो, राइट, है ना? तो ये सर ये तो काफी इजी क्वेश्चन कर दिया सर, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है. अगर नेट फोर्स 0 है, सो एक्स एक्स में कोई फोर्स है नहीं, वाई एक्स में. सो इन दिस केस टेंशन इज इक्वल टू छोटका mg, where छोटका mg is mass of this A. And here बताओ
दो रस्सी है, दो रस्सी, दोनों रस्सी खींच रहा है इसको, है ना, दोनों रस्सी खींच रहा है, राइट. सो इट इज 2t, 2t इज इक्वल टू दिस बड़का mg, हाँ या ना, राइट. वेरी गुड. नाउ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, अनलेस एंड अनटिल रोप का मास ना दे, इफ द रोप इज मासलेस, if rope is massless, tension is same throughout the mass. yes or no, हाँ या ना. साम्या समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, राइट. अगर रस्सी सेम है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम रस्सी है ना, और मासलेस दिया हुआ है, देन टेंशन विल बी सेम, चाहे तुम किसी भी पॉइंट पे लो, दी वैल्यू ऑफ टेंशन शुड बी सेम, ठीक है, राइट. सो जो यहाँ पे टी निकला वही यहाँ पे टी होगा. सो आई गेस तुम सबको निकल गया होगा, है ना, ऑल इफ यू कैन फाइंड इट, राइट. सो छोटका एम बड़का एम का रिलेशनशिप निकल गया, पुट करेंगे तो निकल जाएगा, बड़का एम इज 2 छोटका एम. ओके, बस, वेरी गुड, वेरी गुड. बट सपोज क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि इसका मास मान लो 5 है, मान लो इसका मास 5 है और इसका मास 3 है, मैंने दे दिया, जाओ अब बताओ क्या होगा. will it be in equilibrium? Tell me, will it be in equilibrium? Because we already know, sir, equilibrium में होने के लिए this small m should be equal to 2m, right? But it is not the case, right? है ना, it is not the case. Yes, because this a should be 6, the a should be 6 to be in equilibrium. So now it will not be in equilibrium. Yes or no? बहुत basic सवाल, दिखना चाहिए. Sorry, this should be half, na? Capital M is equal to 2 small m, right? Okay, so what will happen? Yes, b should be 10, b should be 10, sorry, right? So what do you think, what should happen now? What should happen? Don't you think, sir, ये नीचे जाएगा sir और ये ऊपर जाएगा, हाँ या ना? Yes or no? Yes, सबको दिखना चाहिए, है ना? Okay, so what can we do, sir? Equation में एक change आएगा sir, twist, right? अब सर ये 0 नहीं होगा sir, this should not be 0, it is not in equilibrium. This should be what? Tell me. A, हाँ या ना? Yes or no? Tell me, right? So I'll say, so this will go with the expression A. So this is expression A. भाई अगर इसका expression A है, if this expression is A, what is the expression of this? Tell me. Suppose this is A1 and this is A2, right? So I can say, I'll just write the equation. ध्यान दो, ये नीचे जा रहा है A1 से, ये ऊपर जा रहा है A2 से. So I can write the equation like this. Okay, इसके लिए equation क्या होगा? mg minus t, m1g minus t is equal to m1 a1, हाँ या ना इसके लिए. और इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? 2t minus m2g is equal to m2 a2. Everyone is fine with this equation, हाँ या ना? Tell me step by step, yes or no? Right? अब बताओ मेरे पास वेरिएबल कितने हो गए? How many variable do we have here? Tell me, how many variable do we have here? This is equation 1, this is equation 1, this is equation 2, using the same concept. How many variable do we have here? But a1 a2 हो गया ना, right? अलग अलग एक्सप्रेशन हो गया ना, समझ में आ रहा है? Expression is not same, right? It is a1, it is a2. I cannot say that expression is same. Tell me, बताओ, कुछ मिसिंग है ना? क्या मिसिंग है? Tell me, everyone. Samya, Neet, what is missing? खुशी, कृष्णा, मानसी, मैंने बताया, मैंने स्टार्ट किया, राइट? कॉन्सेप्ट, सर a1 और a2 में रिलेशनशिप मिसिंग है, बिकॉज दिस इज कंस्ट्रेन्ड मोशन. यस और नो? सर ये कंस्ट्रेन्ड है,
कंस्ट्रेन मोशन, राइट? ए मूव कर रहा है तब बी मूव कर रहा है ना? सो द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, राइट, एक्सप्रेशन बिटवीन ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेनी वेज, बट बेस्ट जो तरीका मैं समझता हूँ ना, बेस्ट तरीका जो मैं लाइक according to me, there are many methods, by the way. There are 3 or 4 methods, right? But I'm not going to teach you all 3 and 4 methods now. I'll just teach you one method, जो कि बहुत easy है. मान लो कि ये A भाई साहब नीचे यहाँ पे x distance आए हैं, x distance नीचे आए हैं. Imagine this is your distance method, x distance नीचे आए हैं. Okay. Now ये रस्सी जो है, रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ या ना? रस्सी का लेंथ तो कांस्टेंट है. Yes or no? Tell me. Agree? Right? Okay. Yes. Okay. Very good. So अभी क्या बताओ, अगर ये रस्सी x नीचे जाएगी तो ये दोनों तरफ, दोनों है ना, दोनों कितना कितना ऊपर जाएगी? बताओ. Tell me. Because इसको 2 बार खुलना होगा. कितना ऊपर जाएगी? What is this distance? What is this distance? If this is x, what should be the distance? Very good. Don't you think that it should be x by 2? Sorry, ये भी x by 2 जा रहा है, ये भी x by 2 जा रहा है. पूरा रस्सी फिर x खुलेगा. हाँ या ना? Everyone, step by step. सबको ये समझ में आना चाहिए. आ रहा है? Everyone is getting this? Visualize होना चाहिए. Sir, अगर A नीचे आ रहा है तो B ऊपर जा रहा है, right? है ना? और मुझे x रस्सी खुल रही है, दोनों तरफ same length of रस्सी खुल रही है. So it should be x by 2, because just imagine if it is moving at this point, this is and this is, this length is equal to this length, right? So this distance should be x by 2, है ना? So can I say, okay, sir, right? x1 is equal to, or x2 is equal to 2x1. Sorry, this is x1, this is x2, right? So x1 is equal to 2x2. So using this, can I say a1 is equal to 2a2? हाँ या ना? a1 is equal to a2, a1 ये है, a2 ये है. Yes or no? This is your constraint equation, right? तो यहाँ से a1 a2 relationship आ गया. Put कर दो, क्या solve हो जाएगा? Tell me. I hope all of you can solve this. सबको समझ में आई? श्रेया, प्रियंका, साम्या, निशिता, निधि, श्रेया. Shreya, are you there? Shreya left, I guess. Okay, right? Okay. So ये हमारा concept, हम लोगों ने आज क्या-क्या रिवीजन किया? हम लोगों ने आज free body रिवीजन किया. What is FBT? Then we revised how to resolve vectors, how to solve equation, and the basic of constraint. ठीक है? Right? So just go through NCERT. Just go through NCERT. ठीक है? रिवीजन के लिए बस NCERT कर लो. I'll send this PDF also if you want. You can just go through it. Okay, right?